आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑन एन इंडेक्स लेवल 4x हो गया इन द लास्ट 10 ईयर्स। इमेजिन इंडिविजुअल स्टॉक्स ने क्या किया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दिस इज अ सेक्टर विदाउट विच इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव। And now this sector is at a turning point. And as we know, FIIs are continuously pulling out money from India. But in this sector, they have invested more than 1 lakh crores. Yes, हम बात कर रहे हैं इंडिया की प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की। प्राइवेट बैंक्स इंडिया का एक मेगा ट्रेंड सेक्टर है। लास्ट 3 to 4 years, द प्राइस परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन गुड, बट इन द लॉन्ग टर्म, runway is really strong. These companies can compound at 15 to 20% for multiple years. Before I get into the numbers, I'll quickly introduce myself. I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments, and your host for the Smart Alpha Show. Before starting this channel, I used to work with Goldman Sachs, उनकी equity research team में. My goal is to share my institutional grade knowledge with all of you. Subscribe to the channel if you want to stay tuned. Now getting back to why private banks are a screaming buy right now, reason simple है. इंडिया में credit penetration अभी भी low है. Indian household credit penetration is at 41%, which is way lower than other emerging economies. और सबसे important, India का banking system, it is sitting at the lowest corporate debt to GDP levels ever, which means corporate balance sheets are the cleanest they have ever been, which now gives scope to start a fresh lending cycle. चलिए डेटा देखते हैं. Data from Reserve Bank of India says gross non-performing assets, which shows the level of bad loans in the economy, एक टाइम पर 10% था, आज वो गिर के 2% हो गया है. स्लिपेजेस जो बताता है कितने लोन्स NPA बन रहे हैं, वो 5.9% से गिर के 1.5% आ गया है. रिटर्न ऑन एसेट्स जो एक की प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है, वो नेगेटिव से बढ़ के 1.5% हो गया है, विच इज़ ह्यूज. मतलब सिंपल है, जो पेन था बैंक्स ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर चुकी है. अब जो ग्रोथ आएगी वो डायरेक्टली प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होगी. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंपनीज शुड यू एक्सप्लोर टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस मेगा ट्रेंड. चलिए देखते हैं. पहली कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक. दिस इज अ क्लासिक कंपाउंडिंग स्टोरी. बिटवीन 2009 एंड 2019 स्टॉक 10x हो गया था, लेकिन लास्ट 5 सालों में स्टॉक फ्लैट रहा है. बट बिजनेस लोन बुक 18% CAGR से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 22% CAGR से बढ़ा है, और नेट NPA 1.21% से कम होकर 0.3% हो गया है, विच इज़ लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री. नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशंस एंड व्हाट कैन द स्टॉक डू इन द नेक्स्ट 5 years. वैल्यूएशन पहले इन 2021 5 टाइम्स बुक था, आज गिर के 2x के आसपास हो गया है. मतलब बिजनेस स्ट्रांग हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बट वैल्यूएशन चीप हो रही है. There are two cases for this bank. First, if re-rating happens, then upside can be multiple. Or even if re-rating does not happen and if multiples stay where they are, investors can easily get a 18 to 20% CAGR with the stock just because earnings are increasing. दूसरी कंपनी DCB बैंक, ये क्लियर टर्न अराउंड स्टोरी है. लास्ट 3 सालों में मैनेजमेंट चेंज हुआ है एंड ग्रोथ इज पिकिंग अप मीनिंगफुली. Management has given us strong guidance, and till now they're clearly exceeding on all of them. They're guiding for a loan growth of 20%, profit growth of 20 to 25%, and ROE to increase from 12.5% to 15% in the next 3 years. Valuations, the company is available at price to book of just 1.2x and a market cap of 6,000 crores. मतलब आपको एक improving private बैंक मिल रहा है at almost PSU bank valuations. यहाँ एक और एंगल है, which is acquisitions. Starting me, I had mentioned FIIs have invested 1 lakh crore in financial services sector in India, something like RBL Bank, Samman Capital, Federal Bank. Now, DCB Bank is the perfect target for acquisition. We're getting a private banking license in India for 5,000 crores. This is a steal deal for any foreign bank. The summary simple है. Kotak is a consistent compounder and DCB is a turnaround story with an optionality of an acquisition. Do subscribe to our channel if you like this video, share it with your investor friends. We are SEBI registered. Here is our details if you want to go through.